Hello student. Now summarize the integrated rate law for the first order reaction. The for NEET या फिर CET या फिर JEE में डायरेक्ट कैसे आंसर निकालने का, डायरेक्ट रेट लॉ कैसे निकालने का. जैसा यहाँ पर गैस फेज रिएक्शन दिया है, दिस इज फॉर ओनली गैस फेज रिएक्शन. Suppose the 2 moles of A combine with 1 mole of a B and formation of a product. Then according to the rate law equation, the rate is given K into A raised to the power 2, B raised to the power 1. So that is suppose K into A raised to the power 2 into B. ये rate law दिया हुआ है अपने को. तब suppose the condition, if the volume of a vessel is doubled, if the volume of a vessel is double, then concentration half. Concentration क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, because you have been already known C is inversely proportional to the volume. अगर volume बढ़ाते हैं तो concentration कम हो जाएगा. So what will be the new rate? New rate क्या आ जाएगा फिर K. तो when the volume of a vessel is doubled, तो concentration कितना हो गया, आधा. तो यहाँ क्या आ जाएगा फिर A divided by 2 raised to the power 2 और यहाँ पर B divided by 2 like that. This is the new rate, that is the K into concentration of A divided by 2 raised to the power 2 और B divided by 2 या फिर प्रेशर भी ले सकते हैं गैसियस रिएक्शन के. If the volume of a vessel is reduced, second condition, if the volume of a vessel is reduced by 1/4, and what happen, the concentration increases by 4 times. Concentration increases by 4 times. So what will be the new rate? तो क्या आ जाएगा फिर K, here 4A raised to the power 2 and 4B multiplied by 4B. तो what will be the new rate? K into 4A raised to the power 2 into 4B and so on. तो ऐसे ख्याल में रखने का डायरेक्ट अपन कैलकुलेट कर सकते हैं. इफ द वॉल्यूम ऑफ ए वेसल इज डबल्ड, तो कॉन्सेंट्रेशन कितना हो जाएगा, आधा, बिकॉज कॉन्सेंट्रेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम. वैसे यहाँ पर भी वॉल्यूम ऑफ वेसल इज रिड्यूस 1/4, अगर रिड्यूस किया तो कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीजेस बाय 4 टाइम्स. सो द न्यू रेट इज ऑब्टेन्ड लाइक दैट. तो ये ख्याल में रखने का फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन या फिर ए. उसके बाद में सपोज कंसीडर अनदर एग्जांपल लेंगे अपन. सपोज n moles of A formation of a product, then your rate is given, rate equal to K into A raised to the power n. Suppose this rate is given, then what happen, if the concentration of reactant is doubled, if the concentration of a reactant is doubled, then what will be the new rate? Suppose the new rate does not change. New rate does not change. अगर रेट समझो चेंज नहीं हो रहा है तो इसका मतलब व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन? इट इज अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन. इफ the concentration of reactant is doubled and then there is no change in a rate, then it is a zero order reaction. दूसरा, if the concentration of a reactant is doubled, if the concentration of reactant is doubled and then the rate is also doubled, then the rate is also doubled, then what will be the order? कितना लिखने का, n equal to 1. Again, if the concentration of reactant is doubled and the rate becomes 4 times, अगर rate becomes 4 times, तो what happen here? The order of reaction is 2. Again, similarly, if the concentration of reactant is doubled and if the new rate becomes 8 times, then what is the order of reaction? It is a third order reaction. Again, suppose consider if the concentration of reactant is
doubled and if the rate becomes 1.4 times, if the concentration of reactant is doubled and the new rate becomes 1.4 times, then what is the order? Order of reaction is 0.5. order of reaction 0.5. तो ऐसे डायरेक्ट अपन इसके ऊपर सॉल्व कर सकते हैं बाय यूजिंग द इक्वेशन या फिर बाय यूजिंग रेट इक्वेशन यू कैन डायरेक्टली फाइंड आउट द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. तो यहाँ पर अपन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं. दिस इज फॉर ए नीट CET या फिर JEE. ओके.